So the main difference of method of joints and method of section is one, that method of joint is applied and preferable where the complete analysis of the truss is required. Whereas whenever there is a situation that you want to determine the member forces for the selected truss members, then you should prefer the method of sections, which we will study today. Now, other important features of method of joints are that at a time you apply two conditions of static equilibrium, that is usually sigma fx0 and sigma fy0, to determine the maximum two unknown forces at a time, not more than two unknown forces. There are other some points which are helping tools. Those are: analysis of a truss can also be started directly from that joint where at least one known force exists along with maximum two unknown forces present. Instead of starting from determining the reactions, you can directly start the truss analysis from that joint where you have at least one known force and maximum two unknown member forces. But if this situation does not exist, then you should proceed as a first step of the problem solving, that you will go for determining the reactions first. Then what we do, free body diagram of each joint is drawn and each truss member is considered in tension, that is acting away from the joint. If member force becomes with negative sign, that shows the compression, and for next joint it should be considered with negative sign in computations. Then we have another helping tool that we call it theorem of three forces, that if there is a joint at which only three members meet and two of them are in the same straight line, then the force in the third member will be zero, provided that there is no external load present at that joint. We call it theorem of three forces. So this was about few important points regarding the method of joints. Rather, these points are applicable for method of section as well. So I'm going to share the screen now for method of sections. So as I had told you earlier, this method is feasible and generally used when axial force in certain selected truss members are required and when complete analysis of the truss is not required. A cutting section is passed appropriately through the truss members in which the axial forces are required to determine. Maximum three unknowns can be determined at a time using three available equations of static equilibrium. Now the solution steps: first, determination of reactions if necessary. That if necessary means if there is a no joint having two unknowns and one known load, then we will do this first step. Then second step is determination of truss geometry where required. And the third one is passing a cutting
section appropriately with maximum 3 unknowns at a time, then consider either portion of the truss, either left portion or right portion. Apply 3 equations of static equilibrium to determine 3 unknown member forces. Now, what does the appropriate section means? Now, appropriate section mean either it should be vertical or it should be little inclined, which cuts the truss into two entire portions, left portion and right portion. This cutting section cannot be in horizontal direction, because that would never be an appropriate section. So either it should be vertical or it should be little inclined. Then another very important point is suitable selection of the movement center is important to improve the comfort level. That we will see in the numerical problems as well, that how it can help us to reduce the calculation work. So if you have any question up to now, you can ask. कोई आपका क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, ताकि हम फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर चलें. जी, anybody? So I think there is no question. Yes, Mr. CR, where you are? Yes, sir. Continue. We can continue, sir. So this is the first problem. Now, in this truss, which is a simply supported truss, having a roller support at A and hinge support at D, then it is required to determine the member force in BC, member BC, then member CF, this inclined member, and in member EF. These are the 3 members in which we want to determine the forces. Now, of course, we will proceed by first step, that is determination of reactions. We have a horizontal force at C of 2 kilonewton, then 2 vertical forces of 5 kilonewton at E and 3 kilonewton at F. Now this horizontal force at D will be of 2 kilonewton, but in opposite direction, being the reaction, and VA and VD can be determined either by, actually जब भी आपने reaction मालूम करने हैं, you have to apply 3 equations of static equilibrium considering that truss as a whole. It is always, whether it is a method of joint, whether it is a method of sections. So sigma Fy Va plus Vd is equal to 8. Then for determining Va, sigma Md will be taken as 0. Then it will give us Va into 12 plus 2 into 4 equal to 3 into 9 plus 5 into 12. That will give us Va as 2.83 kilonewton. Then Vd simply subtracted from 8. The remaining is 5.17. Now, after determining the reactions, the next solution step was the next solution was the determination of the geometry where it is required, because this member CF is involved, so its inclination is required. So this theta is required to be determined. That is very simple. That is theta is equal to tan inverse 4/6. That is 33.6.
7 degree. Now, next step is pass a cutting section appropriately. Of course, we need the forces in these three members. So the appropriate section will be shown by this red color. That section PQ. And this is cutting maximum 3 members. This is the limit. It can cut less than 3, but maximum not more than 3. So now we have the choice to consider either right portion or the left portion. Now it is very clear that if we consider this left portion, it involves less forces. So it will be more convenient. So considering the left portion, and this will be the free body diagram. Now one thing more which is required to be cleared here, that we can consider the movement center anywhere. There is no restriction. Movement center can be a kilometer away, maybe within this truss, maybe outside the truss. There is no restriction at all. इस कॉन्सेप्ट को अपने ज़हन में क्लियर करें कि मूवमेंट सेंटर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो कहाँ लिया जाना चाहिए. यस, आपका उस फोर्स से उस मूवमेंट सेंटर तक का जो एक डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट शुड बी नोन. सो फर्स्ट, चूंकि हमने 3 फोर्सेस मालूम करनी है, एफ बी सी, एफ एफ सी, एफ एफ ई. सो for first force, for FBC, the appropriate moment center, if you look at this free body diagram, the appropriate moment center is F. What will happen if you consider F as moment center? These two unknown will become 0. And only one unknown will come into picture. By doing this approach, adopting this approach, our calculation work will reduce. So we will be in comfort zone. So for FBC, sigma MF0, now just this FBC into 4 plus 2.83 into this distance 3 is equal to 0. So FBC will become minus 2.123 kilonewton, minus sign shows the compression. Now you just imagine that in one line, not complete even one line, the answer is with you. And that is possible just because of selecting appropriate movement center. अगर movement center आप कहीं और ले लें, that will not be so simple. That is why I have told earlier that selecting the appropriate movement center can facilitate a lot in calculation work. So simply a single line. Now similarly for FFE, for FFE. Now again, the appropriate movement center is C. Yes, it can be the movement center. The theme is again the same. These two forces will become 0 and only one unknown will come into picture at a time. So for FF, sigma MC is equal to 0. So
FFE into 4, the vertical distance, plus 3 into 6, this total distance, is equal to 2.83 into 9, this 3 plus 6. So this will result into FFE equal to 1.867 kilonewton. Again, the answer is in one line. Answer is in one line. That is just because of considering the appropriate moment center. Now finally, this sigma FFC, you have two approaches. Now other two unknowns are known now. So either you proceed through sigma Fy0, or you can consider the appropriate moment center. Both approaches are good. So for FFC, this inclined member, sigma MB is 0. So of course, it will have two components. One is FFC sine of theta, which will become 0, being passing through the moment center, and only FFC cos of theta will come into the picture. So this will be 2.83, this reaction into 3 is equal to FFC cos 33.7 into 4 plus FFE into 4. This has already known in the previous step. So this will result into FFC equal to 0.307 kilonewton. So three member forces in just 3 lines. Three member forces in just 3 lines. I think इससे ज़्यादा कंफर्ट इस नहीं हो, इससे ज़्यादा मुख्तसर जवाब नहीं निकाले जा सकते. That is the easiest and the simplest approach by selecting the appropriate movement centers. Yes, if you have any question at this moment, you can ask. अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा एक क्वेश्चन था. जी, आपकी आवाज कम सर आ अब रही आ है, रही है? थोड़े सा अपना. जी जी. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम अलग फोर्सेस के लिए अलग मूवमेंट सेंटर लेते हैं, हम एक ही मूवमेंट सेंटर ले सकते हैं दो मुख्तलिफ फोर्सेस के लिए? आपकी आवाज अभी भी कम है, थोड़ा सा जरा बोलें जरा लाउडली. सर मैं पूछना चाह रहा था कि हम डिफरेंट फोर्सेस के लिए डिफरेंट मूवमेंट सेंटर्स ले रहे हैं, तो हम एक फोर्स के लिए मतलब एक ही मूवमेंट सेंटर ले सकते हैं अलग अलग फोर्सेस के लिए, कि हर फोर्स के लिए अलग मूवमेंट सेंटर लेना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे हमने क्या किया है इस प्रॉब्लम में? What we have done in this problem? सर हमने अलग अलग सेंटर्स लिए हैं हर पॉइंट पे. जी 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 जी. उसकी फिलॉसफी समझें आप, उसका थीम और कॉन्सेप्ट समझें कि अगर हमने FBC निकालनी है या तीनों के लिए एक मूवमेंट सेंटर तो कभी भी नहीं हो सकता. लिहाजा इनके डिफरेंट मूवमेंट सेंटर्स होंगे. फॉर FBC, F will be the moment center. For FFE, C will be the moment center. क्योंकि आपने एक वक्त में एक अननोन को जब आप पिक्चर में लाएंगे और बाकी दो जीरो हो जाएंगे तो आपका कंफर्ट लेवल सब्सटेंशियली इंप्रूव कर जाएगा. Yes, for inclined member, you have the choice whether you proceed through sigma Fy0 or through the movement center. That is your choice. And both are, I think, equally good. जी, और कोई क्वेश्चन आपका? जी, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं.
सर जो मूवमेंट सेंटर है उस पे एक वक्त में कितनी फोर्सेस लग सकती हैं? कोई इस तरह की कंपल्शन है? क्योंकि इधर जो हमने मूवमेंट सेंटर लिया था सी, उधर जहाँ से सेक्शन कट किया था उधर आपने कहा था कि 3 मैक्सिमम फोर्सेस लग सकती हैं। तो बाद में हमने मूवमेंट सेंटर को सिलेक्ट किया था। तो फिर जब मूवमेंट सेंटर सिलेक्ट करते हैं उस पे 4, 5, 6 जितनी मर्जी फोर्सेस लग सकती हैं, या उधर भी मैक्सिमम 3 फोर्सेस ही लगेंगी? नहीं देखे ना यार, मेरी बात सुन, आप दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। कटिंग ऑफ सेक्शन का क्राइटेरिया डिफरेंट है कि वो मैक्सिमम 3 अननोन से ज्यादा उसको कट नहीं करने चाहिए। उसकी भी वजह ये है, यू डोंट हैव इक्वेशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम मोर देन 3। दैट इज वाई वो 3 से ज्यादा कट आप उसको एक वक्त में एड्रेस नहीं कर सकते। वो फिर अगर 4 कट रही हैं तो फिर आपको 2 सेक्शंस के थ्रू प्रोसीड करना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम मेथड ऑफ सेक्शन नहीं है, मेथड ऑफ सेक्शंस है। ठीक है, वो एक अलग चीज है। अब जब आपने सेक्शन पास करके ईदर पोर्शन ऑफ द ट्रस्ट एज ए फ्री बॉडी डायग्राम आपने कंसीडर कर लिया, उसके बाद अब मूवमेंट सेंटर की बारी आएगी। दो चीजों को मिक्स ना करें। अब मूवमेंट सेंटर पे अब आप देखें, अगर यहाँ कोई फोर्स होती, ठीक है, वो भी हो भी सकती थी, लेकिन जाहिर है कि चूंकि हमारा हम इस पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पोर्शन वाली फोर्सेस को ही हम कंसीडर करेंगे, राइट पोर्शन वाली फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन मूवमेंट सेंटर के लिए हम किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो सी भी हो सकता है, वो डी भी हो सकता है, वो ई भी हो सकता है, वो आउटसाइड दिस ट्रस्ट भी हो सकता है। जी, एनीथिंग एल्स? सर एक और क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है फॉर एफ एफ ई, उधर आपने मूवमेंट की इक्वेशन लिखी हुई है। तो सर उधर आगे एफ ई एफ मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, ये किस तरह है? 3 मल्टीप्लाई बाय 6 किस तरह है जो ऐड हो रहा है? आपकी नहीं नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? सर ये सेकंड लास्ट स्टेप था, फॉर फोर्स एफ एफ ई। एफ एफ ई कि एफ एफ सी? सर एफ सेकंड एफ लाइन, ई। एफ एफ ई, अच्छा। जी सर, 3 मल्टीप्लाई बाय ये 6 क्या लिखा हुआ है आगे ऐड। आप इसमें 2.83 इंटू 9 वाला समझना चाहते हैं या 3 इंटू 6 वाला समझना चाहते हैं? 3 इंटू 6 वाला। 3 इंटू 6 वाला। मूवमेंट सेंटर है सी, ठीक है। अब आप ये देखें, इसमें आपके पास तीन चीजें पिक्चर में आ रही हैं। एफ एफ ई, दिस 3 किलो न्यूटन, ये फोर्स भी तो लग रही है ना, और ये 2.83 का रिएक्शन भी है। सो तीन चीजों ने आना है, ठीक है। अब एफ से सी तक का जो फासला है वो ये 6 मीटर है, ये दिया हुआ ऊपर, ठीक है। अच्छा, दिस 3 इंटू 6। अब लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का पढ़ें पहला पार्ट। इफ फोर्स कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर इन इट्स लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स को सीधा ऊपर ले जाएं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 है। और the movement center can be shifted anywhere in the line parallel to the line of action of the force। ये आपने पढ़ा है ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? यस सर, वो समझ लग गई है, पहले लगा नहीं हुआ। चलें, शुक्र है, शुक्र करें समझ लग गई आपको। जी, एनीबॉडी एल्स? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ये फोर्स एफ बी सी के लिए आपने मोमेंट एफ ली है सेंटर, तो सर ए नहीं ले सकते थे हम? उसकी क्या रीज़न थी ए नहीं लिया हमने? ये मैं उस वक्त ही बता चुका हूं। आप किसी भी जॉइंट को मूवमेंट सेंटर ले सकते हैं, लेकिन अगर एफ की बजाय कहीं और लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन वर्क बढ़ जाएगा। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, आप करके देख लें। ओके सर, ओके, कोई थैंक यू सर। कोई कोई पाबंदी नहीं है। आप उसको ए ले लें, बी ले लें, कहीं ए से
ए से 50 मीटर दूर ले लें, यू विल इंक्रीज योर वर्क। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? इंसान पे इस चीज की तो कोई पाबंदी नहीं है ना कि वो अपने लिए कोई मसाइल बढ़ाना चाहता है या कम करना चाहता है। ये तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल है कि हाउ स्मार्टली ही कैन एड्रेस हिज प्रॉब्लम्स in academics as well as in real life. So we proceed for next problem. ये different types की problems हैं, ठीक है? Now in this problem, this is again a simply supported truss where we have to determine the forces in four members: FCD, FCF, FDF and FEF। चार हैं ये, ठीक है? जाहिर है चार एक सेक्शन के साथ तो एड्रेस नहीं हो सकती, वो मैक्सिमम 3 हो सकती हैं। सो इट मींस एटलीस्ट वी हैव टू प्रोसीड फॉर 2 sections. So again this is subjected to 800 kilonewton, 800 kilonewton, 800 kilonewton. और अगर हम if look at the geometry of the truss, we can conclude that this truss is symmetrically loaded. This truss is symmetrically loaded at 2.5 meter, then again at 2.5, then again at 2.5, then again at 2.5. So reactions, instead of involving in calculations, if you write this sentence that being symmetrically loaded, the reactions will be equal, then it will be. लेकिन अगर आप सिंपल इसकी रिएक्शंस की वैल्यू लिख देंगे विदाउट गिविंग दिस रीजन, देन द क्रेडिट विल बी हाफ। आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो रिएक्शंस 1200 और 1200 आए हैं ये किस वजह से आए हैं। सो बीइंग सिमेट्रिकली लोडेड रिएक्शंस विल बी इक्वल, दैट इज 1200 किलोन्यूटन। और अगर ये सिमेट्रिकली लोडेड ना होते तो पिछली जो असाइनमेंट में, जो पिछली प्रॉब्लम में हम जो तरीकाकार अडॉप्ट किया है वही हम तरीकाकार अडॉप्ट करते टू डिटरमिन द रिएक्शंस। So of course after determining and after having the reactions, next is the geometry of the. So this distance is given, this angle is given, and this angle is given. So 60, 60, and of course at B it will be again 60. So now it is required to determine y1 and y2, that is CF. So we can proceed that tan inverse, the tan 30, this angle tan 30, that is CF over EF. So this CF, that is y1, will be equal to 5, that is EF into tan 30, that will be 2.886 meter. And surely the y2 will be half of it because it is at the same distance but in a halfway. So either you write directly half of it, or you may proceed in the similar manner that tan 30 y over 2.5, you will get the same answer. Now coming to the truss analysis, the section 1.1 will be passed through these members CD, DF and EF, and ये तीनों ही required है. And surely it is more convenient to consider the right portion as a free body diagram.
So the right portion will become like this. So FDC, FDF, and FEF, three required member forces. Again, the same concept we are going to apply, that is for member DC or member DC, this member DC. So the appropriate moment center is F, because other two will become 0, and only one unknown member will come into the picture at a time. Of course, having its two component, that is FDC cos of 30 and FDC sine of 30. So we will write the expression, that is this 1200 into 5, F से distance लेना आपने, ठीक है, minus this 800 into 2.5, this distance, plus FDC cos of 30, this horizontal component, into this 1.443, plus FDC sine of 30, this is the vertical, into this horizontal distance 2.5, equal to 0. So by simplifying this equation, we will get FDC equal to minus 1600 kilonewton. That is, negative sign just shows the compression. Now similarly for member EF, this horizontal member at bottom. So the appropriate moment center is again D. It is the same concept which we have applied in the previous problem. So this will give us the very simplest calculation. Only two forces will come into picture, that is FEF into 1.443 equal to 1200 into 2.5. So FEF will become 2079 kilonewton. Then the third one, FDF. Then as I have told you in the last problem, you have the choice whether you proceed through sigma Fy0 or through the moment center approach. So in this problem, we proceed through sigma Fy0. Sigma Fy0. So if we consider sigma Fy0, this 1200 minus this sigma Fy is at joint D. So 1200 minus 800 plus FDC sine 30 minus FDC. Yes, this is the component of two forces. One is of DC, one is of DF. Vertical components of these two. FDC sine 30 minus FDF sine 30 equal to 0. This will give us FDF equal to minus 800. Minus sign shows the compression. So if you have any question up to now, you can ask, so that we can proceed for next section, section 2.2. कोई question नहीं होना चाहिए. Anyhow, now if we look at this truss, this member CD is known now, this DF is known now, this EF is known now. Now if we will proceed for section 2.2, because
the force in member CF, this vertical member, is also required. And this section 2.2 cut the 4 members, 1, 2, 3, and 4, out of which 2 are known. So this section 2.2 contains only 2 unknowns. Okay, that is acceptable for us. But directly section 2.2 was not possible to address. So again, for section 2.2, we will consider the right portion being more convenient. So the free body diagram of section 2.2 is like this. Now we need the force in member CF, this vertical member. Now for this member CF, the appropriate moment center is D. So sigma MD0 gives us this equation. अब यहां से देखें 1200 into 2.5, यहां से देखें ना 1200 into 2.5 plus F, because both are in the same direction, into 2.5. Then this load 800 kilonewton into 2.5 equal to FEF into 1.443. This will give us FCF as minus 800 kilonewton, that is compression. जी इसमें कोई कंफ्यूजन है आपकी? सर हम वन बाय वन बोले भाई. जी कोई क्वेश्चन आपका? सर हम ये अपना ये डी के ऊपर ले रहे हैं मोमेंट, तो हमने 800 मल्टीप्लाई 2.5 किस तरह लिया? 800 फोर्स हमारी डी पर नहीं लग रही? तो यह भी तो लग रही है ना, यहाँ देखो, ये भी देखो, ये किधर जाएगी? गौर करो ना भाई. ठीक ठीक. हाँ जी. और इसके अलावा आपका क्या ख्याल है कि ये मैं अपनी तरफ से 800 ले आया हूँ? नहीं सर, वो देखी नहीं थी मैंने वो फोर्स. यही तो चक्कर है सारा. चले तो हम थर्ड प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करते हैं. दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ये डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जो आपको कराई जा रही हैं. अब ये दिस प्रॉब्लम apparently seems to be little complex, but it is not. So only the member force FDJ is required. This vertical member, इसमें फोर्स हमें चाहिए. अब डायरेक्टली इसमें से सेक्शन पास अगर करें तो it will cut 1, 2, 3 and 4 members. So we cannot directly proceed with the section 2.2. So we have to proceed through section 1. So again, the first step is to determine the reactions, like in what we did, similarly as we have done in the first problem. There are 3 loads, 10 kilonewton at B, 10 kilonewton at C, and 10 kilonewton at I. So sigma Fy and sigma Mg0, so we will get VA 18.33 kilonewton
and VG 11.67 kilo, because the sum of these two has to be equal to 30 kilonewton. Now the geometry of the truss. We need theta 1, theta 2, and theta 3. I have shown this is theta 1 at A, theta 3 at J on left side, and theta 2 at D on left side. So theta 1 will be, these vertical and horizontal distances are given. These are the 6 members at the rate of 4 meter each. This vertical 4 meter, 6 meter, 4 meter, and 2 meter. So with these distances, this angle can be, theta 1 can be determined very conveniently. That is theta 1 tan inverse 6/12. That will give us 26.56. Theta 3 simply 4 tan inverse 4/4, 45. And theta 2, that is 180 minus 90 minus theta 1. We get 63.44. So for this section 1.1, it is again more convenient to consider the right portion as the free body diagram. This one. Now we will determine only the two member forces Ij and Ej, because that will help us for section 2.2. So for Ij, this one, that is Ij, this force at bottom, Ij. The appropriate moment center is again E, where other two will become 0. Now you look at how simple this equation is. 11.67 into 8 equal to Fij into 4. Fij is 23.34 kilonewton. Now can you imagine a simple calculation which can be possible more than this? Not at all. इससे ज्यादा कोई simple और easy calculation नहीं हो सकती. And that is just because of selection of appropriate moment center. Then for Fej, this inclined member, the appropriate moment center is G, this one. इसमें क्या होगा? ED और IJ ये 0 हो जाएंगे. इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, EJ cos 45 और sin 45. So Fej cos 45 into 8 plus Fej cos sin 45 into 4 plus 10 into 8. 10 into 4 plus 4, 8. So Fej will become minus 9.43 kilonewton, that is compression. Now for section 2.2, in which we have to determine the force in member DJ. Again, we will consider the right portion. So for FDJ, this one, A, which one is here, which is here, this one, वो actually इसमें show नहीं हुआ. So A is the appropriate moment center. So the equation will be this 11, this one, reaction into 24 minus 10 into 16. ये वो हैं जो forces हैं.
अब यहाँ पे मेंबर फोर्स आएगी माइनस एफ ई जे कॉज ऑफ 45 इंटू 16 माइनस एफ ई जे विच was determined earlier, FEJ sin 45 into 4 minus FDJ into 12 equal to 0. This will give us minus 16.67 kilonewton. That is the compression. Now look at, apparently this truss seems to be quite difficult, but the solution is on half page. And that is possible, that how smartly you address a problem. अगले भी टॉपिक्स में और यहाँ पे भी. If you have any question in this problem, you can ask. कोई क्वेश्चन है तो बताइए. इस पे जरा 5 मिनट का आप ब्रेक ले लें और इसको जरा गौर से देखें ताकि फिर हम फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम को एड्रेस करें.
जी, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आया? So if no question, if you don't have any question, then we can proceed for the next type of problem. Now look at this. A drawbridge is being raised by a cable EI. The four joint loadings shown result from the weight of the roadway. Determine the forces in members EF, DE, DF, CF, and FG. Now, if you look at this problem, apparently it seems to be difficult to determine the reactions. Now, if I will ask you that what is the degree of constraint of this truss, how you will reply? Yes, any one of you? जी, आप में से कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है? Yes, Mr. CR, what is the degree of constraint of this truss? External degree of constraint. CR सो तो नहीं गया कहीं? Yes, roll number 95. भाई ये नॉन रिस्पॉन्डिंग क्यों हो गए हैं आप? Please switch on your cameras. अपने कैमरास को ऑन करें. और बाकी किधर हैं?
जी, बाकियों के कैमरे क्यों नहीं ऑन हो रहे? Only 4 cameras. Where are the others? जी, अब आप क्वेश्चन का जवाब बताइए कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट ऑफ दिस ट्रस? सर 2 होंगी। नहीं, 2 कैसे हो सकती है? आप इस थोड़ा सा इसको सर ब्रीफ करें एक जरा, कैसे हो सकती सर एक हिंज स्पॉट लगी हुई है सिर्फ। है? हिंज सपोर्ट लगी हुई है, ठीक है, यस सर। और बाकी ये जो केबल ई आई है, ये क्या चीज है? ये सर भाई केबल आप ये मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं, रोल नंबर 106। यस सर। ये जिसके कमरे में पंखा चल रहा है, पंखे का एक वर्टिकल रॉड है जो छत के साथ कनेक्टेड है। उस पंखे के रॉड की डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट कितनी है? जरा गौर करके इसको देख लें, पंखे की तरफ देखें, उस रॉड की डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट कितनी है? कितनी है सी भाई? जी, सर ये 90 है। और डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट, डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट क्या होती है? पता है? पहले ये मुझे बता दे। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। नहीं सॉरी सर, नहीं पता सर। हाँ, तो पहले इस तरह बताएं ना, खाम खा मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं। डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट मीन रिस्ट्रिक्शन टू मूवमेंट। ये जब आपने डिटर्मिनेसी और स्टेबिलिटी पढ़ी थी, उसमें ये चीज आती है कि जो अब ये जो पंखा है, ये उस रॉड के जरिए से छत से लटक, कितने में इसको, इसकी रेजिस्टेंस अगेंस्ट मूवमेंट है रॉड की? चले इस तरह समझ लें आप, फिर पंखे को गौर से देखें। ये बाकी को भी कमरे में अगर कोई पंखे लगे हैं तो उनको गौर से देखें।
चले मैं इसको किसी और तरीके से पूछता हूँ। अगर बिल फर्ज यहाँ पे कोई रोप लटका हो, कोई रस्सी लटकी हो और आप उससे लटक जाएं, तो आप जब लटकेंगे तो उस रोप की डिग्री ऑफ, यानी कि जो डिग्री ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है वो कितनी होगी? दैट विल बी 1। ओके सर, थैंक यू सिर्फ सर। आपको समझ आ गई बात कि ये पंखे के रॉड को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो वो वर्टिकली नीचे आ जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। इसको हम दाएं बाएं इसको मूव करा सकते हैं, ठीक है, ये घूम सकता है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो सकता। यस सर। ये बात समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है ये। इसी का नाम डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट है, ओके ठीक सर, है। थैंक यू। और यही फंक्शन जो है वो केबल ईआई कर रही है। ये बात समझ आई आपको? जी सर, आ गई। लिहाजा इस ट्रस की जो डिग्री ऑफ कंस्ट्रेंट है वो 3 होगी। 2 आएगी हिंज सपोर्ट से और 1 आएगी उस केबल जी, केबल की सर अपनी 1 डिग्री है सर। ईआई से। जी 1 डिग्री है तो 2 प्लस 2। अगर 2 सिर्फ इसकी हो तो ये तो ट्रस ही स्टेबल नहीं होगी। यस सर। so again proceeding for this problem, अब अपने माइक जरा बंद कर दे ताकि हम, जी कोई सवाल है बताएं मुझे, अगर नहीं है तो हम चलते हैं आगे अगली इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। सो in order to start the truss analysis, tension force in cable EI is to be determined first after having the geometry of the truss. Now this geometry in blue color is given 20 degree. So the geometry shown in red color that is determined by you, that has to be determined by you. Very simple, that if you extend this vertical member straight, it will have the angle of 20 degrees, the same angle. So this theta can be determined from the given dimensions 3.2 and 4, that is tan theta is equal to tan inverse 3.2 over 4, 38.6. Now for the force in cable EI, let it be T, टेंशन, जाहिर टेंशन ही होगी, जिस तरह पंखे के रॉड में हमेशा टेंशन होती है, कंप्रेशन कभी भी नहीं हो सकती। सो वी टेक मोमेंट एट ए, क्योंकि जो दो इसके कंपोनेंट होंगे, रिएक्टिव कंपोनेंट होंगे, वो 0 हो जाएंगे। सो सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगे, टी cos of 50 and t sin of 50. So t cos of 50, ये जो डिस्टेंस है 3 plus t sin of 50 vertical, this total distance, that is 12, is equal to 16। तीन लोड है ना, 1 2 और 3, 16। अब जो इसके पैरेलल कंपोनेंट होगा वो होगा 16 cos of 20। So 16 cos of 20 is 4 plus 8 plus 12. So this tension in the cable EI will become 32.07. Now as we have to determine
the forces in these 5 members. So sometimes हमने शुरू में कहा था कि मेथड ऑफ सेक्शन में it is preferable and more convenient to use the appropriate movement centers, but not always. In this problem, we will see that joint approach is equally good. In this particular problem, so if we consider joint, because now this is known and these two forces are unknown, so method of joint वाली जो condition है वो applicable हो गई. अच्छा, अब ये है one thing more. I have rotated this joint orientation. ये इस तरह ये टेढ़ा है और ये इसको सीधा कर दिया गया है. You can rotate the orientation of a joint to any convenient direction or any convenient position, provided that these relative angles are not changed. अगर ये relative angles change नहीं होते तो इसकी ओरिएंटेशन को आप कन्वीनियंटली तब्दील कर सकते हैं. ये एक कंडीशन है कि रिलेटिव एंगल जो हैं, जो EF का T के साथ है वो 50 रहना चाहिए, EF का जो DE के साथ है वो 90 ही रहना चाहिए. So the same thing I have done here, but doing this our convenience level has improved substantially. बजाय इसके कि आप गर्दन को टेढ़ा करके उसको कंसीव करते रहें, this is more convenient and easy to conceive. So joint E sigma fx will give you the simple approach FEF plus D cos of 50 equal to 0. So EF will become minus 20.61 kilonewton. This is compression. Similarly, sigma Fy FED is equal to T cos of 50. FED, its value becomes 24.57. Now you have seen that in this particular problem, this joint approach is equally convenient. But in the earlier problems, it was not. So you have to weigh that how you have to proceed. And that is only possible when you do a lot of practice of different problems, which I'm going to give you some problems after this lecture. So then after joint E, the next joint may be joint D. इसमें से हमने 3 ही joint लेने हैं. The orientation is this one. ये सिर्फ टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे orientation ठीक हो जाएगी. Sigma fx FDC, ये basically exactly method of joint है. Rather I should prefer that कि अब इसको आप practically copy pencil लें और इसको solve करें और अपने कैमरास को ऑन करें so that I can monitor your progress. Please, ये सारा method of joint है. इसके बाद एक joint है F and that problem will be concluded. Method joint D और joint F आपने लेना है और इसको जरा करें, अपने कैमरास को ऑन करें. सर एक क्वेश्चन था. जी सर इसमें हमने जॉइंट्स पे कुछ चले गए हैं, हम सेक्शन वाली चीज पे क्यों नहीं रहे इसके अंदर? इसलिए कि इसमें जाहिर है कि जब आपने इसमें फोर्स मालूम कर ली, जी सर, तो अब जब आप मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन के तरीके से प्रोसीड करेंगे तो वो इससे डिफिकल्ट अप्रोच हो जाएगी.
वो बिल्कुल यही जवाब आएंगे, सेम आंसर यू विल हैव, लेकिन उसकी अप्रोच उतनी कन्वीनियंट ही रहेगी जितनी कन्वीनियंट इसमें आ रही है. दैट इज द जस्ट सिंप्लिसिटी एंड कन्वीनियंस लेवल, नथिंग एल्स. ओके सर. जी, अब आप जरा इसको सॉल्व करें. और ये बाकी लोग भी अपने कैमरास को ऑन करें, प्लीज हरी अप. सर एक और चीज बता दें. जी जी. सर ये जो हमने टी फोर्स निकाल रहे थे सर, ये 16 कोस 20 के आगे 4 + 8 + 12, सर एक बार दोबारा बता दें बस, ये किस तरह है. भाई ये जो आपके तीन जो आपकी फोर्सेस लगी हुई हैं एट बी सी एंड डी, ये वो वाली चीजें हैं. ठीक है अलग सर. अलग करके ले लें, अलग अलग करके ले लें, या इस तरह ले लें. ठीक है आगे समझ गए. ओके, थैंक यू सर. ये गर्ल स्टूडेंट भी कुछ काम कर रही हैं कि वैसे ही बैठी हुई हैं? सर कर रहे हैं. चलें, दैट्स गुड.